Should I start? Hello. Introduction Good morning, everyone. This program, I.E.A., Alumni Interactive Education Activity, was started long back, and today we are having Dr. Ishu Bishnoi. He is from 2012 to 15. So please welcome Dr. Ishu Bishnoi. Hello. Good morning, everyone. He's already on. The live है, it is live also. ये जो तुम्हारे सामने बैठे हो ना, they are more than डॉक्टर से ज़्यादा IT जा रहे हैं। ये हमें सोचने की जरूरत नहीं है। पर ये है, मैंने इनको बोला, मैं जाने नहीं दूँगी जब तक तुम next वाले को बता के याद कर। Okay, so I will talk on 10 years post MCH, what to retain, what to release, and what to redefine. So these are my mentors. I passed my MCH in 2015. I was from 2012 to 15 batch. Further redefine this cerebrovascular neurosurgery under Professor Yoko Kato. So I am associate professor at the Maharaja Agrasen Medical College, and also I'm doing private practice from January 2020. So this is my hospital. It is around 200 kilometers from Delhi, and this is my building. So academic journey. After joining as assistant professor, I always admired academic part of neurosurgery, and I am working there as a single neurosurgeon for last 11 years, and there were few neurosurgeons along with me, but they left early. And I have since then published 4 book chapters and 30 articles, and I have done more than 45 oral presentations in various national and international conferences. And I am a member of Fujita Alumni Association. I'm working there as a secretary, and I'm organizing their webinar for last 3.5 years. And I have reviewed around 15 articles, and I have developed my own technique of awake static neurolysis, which was published in Neurology India. So this is my journey in the last 11 years. And, after passing from the GIPMER, I'm coming to the point what to retain from GIPMER. Actually, it is everything, but the special part from the GIPMER is the vascular neurosurgery. It includes both endovascular and open techniques. Endovascular because it is unique in India, and almost most of the world neurosurgeons, they are not doing endovascular. So it is a privilege that you are getting it from the GIPMER without doing any kind of special fellowship. And now the part has developed more, and now we are doing thrombolysis and backbone more techniques. So this will be a unique aspect of you when you pass out from the GIPMER. Second was the vascular neurosurgery. Here we do clipping, which most of the big institutes doing, but AVM excision we are performing here since last I think in 2013 when I was here and in second year MCH, we were doing AVM excision, and this is unique because AVM excision, very few neurosurgeons they are able to do AVM excision. Then the attitude. Here you can see the AVM. It is considered one of the most challenging type of case. So this type of attitude you learn from GIPMER. This is the risk-taking behavior, and also we are more prone to do routine cases, elective cases. They are tough to do. So this attitude you develop in the GIPMER, and it gives you extra edge when you enter into private sector or in some peripheral part where the most of the neurosurgeons they are doing trauma or only spine, but you have an extra edge that you can do complicated cases like AVM, tumor, and many more.
and the habit of discussion of cases pre-op, because this looks like a routine that you are doing it in a pre-op period. You are bringing scans and discussing, but here you can rule out whether to do it like this way or not, or whether to do this case or not, because when you are alone and doing same thing in the taking responsibility for the case, this matters a lot, because you try to minimize the mistake. You don't want to do that kind of case which can give you bad name or you can harm the case. So this part is very important. Second is maintaining enduring commitment to writing articles. Currently, I don't know, but at my time, ma'am, Dr. Daljit Singh, they used to push us to write articles, and that's why I developed this habit, and I'm still maintaining this habit despite that I'm a lone neurosurgeon. Because if you write articles, you engage in knowledge and you try to imbibe new knowledge and you learn much more. Because if you don't write articles or don't read articles, you will not be exposed to the new things which are coming in neurosurgery in every year. So association with GIPMER, because of course this is must. You have to be associated with the parent institute and with the seniors, with the juniors, with the colleagues, so that you can learn more and more and you make friends. And the habit of learning. And this I especially admired about Professor Anita ma'am, because she was in the UBCon and she learned this technique. Because in my time there was no UB procedure, so she learned this at after becoming professor. So you can observe your professor that they are still learning new things and they are trying to bring that thing in the department. So observe your professor and this habit of learning, you must retain it. What to release? So, okay, this is controversial, but it is based on my training and my own observation when I was in 2012 to 2015. Examining admitted cases in the ward on Saturday. Like if you are a professor, at my time, the major round in the ward was on the Saturday. But I believe that you should meet your patients daily. At least try to meet them daily and talk with the attendant. So this habit should be released from you. And the neurosurgeon survival, second part is spine and peripheral nerves are as important as brain. Like in the outside, JB Pant is especially famous for brain, the vascular part. But the spine and peripheral nerves, they are uh, as important as brain, because the spine cases, peripheral nerve cases, they don't require ICUs. And when you go outside and learn the logistics and you try to do those kind of cases, which need minimum resources and which are not as complicated as the brain cases, because you can do complicated cases, but for peace of mind, for good night's sleep, you want those kind of cases which can be done easily. So this part I believe that in 2012 to 15 it was not that much developed, which I hope it is now. Then the acknowledging mistakes in front of the relevant person and learn from it. Not every consultant is able to acknowledge their mistake. Like I can do bad surgery, I can do poor tumor excision, I can do malposition of implant, but acknowledging that mistake and then relevant person means you can discuss it with your colleague or with the juniors and tell them that it should not be done like that. So usually in the big institutes, consultants, not every consultant is able to acknowledge the mistake. They usually say that, oh, it's okay, I have done it good way. But I believe that if you are doing something bad with the relevant person, you need to discuss it and tell them that this should not be done, so that your juniors or colleagues, they don't do that kind of mistake. And then the bond, like because if you are meeting on only on one day in the ward patients, so you cannot maintain bond with the family. So if you want to maintain a bond with the patient and relatives, you need to meet them daily. And also this is very important, because I don't know all of you will be able to join the institute and there the people will be working under you. But if you are working alone and you are working in some
peripheral part, you will be the only face who is in front of the relatives and patient. So you must make a bond, and this bond will help if patient turns up good or bad. Last part is redefine yourself. So after getting out from the GIPMER, uh, the surgical skills. This part is very important because you learn uh, throughout your life. It is not that you learn everything. And this, the surgical skills can be redefined by attending workshops. I myself did hands-on workshop, academic workshop. Then I went to my anatomy department, and there I did dissection of peripheral nerves, especially brachial plexus, because I was not aware of anatomy of brachial plexus that much, and that's how I learned. And now the simulation is also there. You can learn it from the simulation, and then the fellowship. Second part is I strongly suggest that after passing from here, everyone should go for some kind of fellowship, whichever part of neurosurgery you like, and prefer it of 12 months or more. But if you are getting it of 3 months, 6 months, that will be okay. And you should do that fellowship because to learn about the institute, the another institute, and to for your skills, and also about the working environment, different kind of machines, and this also helps in building relationship and joining societies, because these big institutes, they are in some kind of society. So that will give you an extra advantage that now you will be part of some new society, and that will help in redefining your personality. And then the present work, your work in national and international conferences. Like, don't be that guy after passing from this institute, you are not going any kind of conference, or if you are going to conference there, you are not presenting. Try to present your work in every kind of national or international conference, because this gives you confidence, and also if you're showing your work to the different people, they will criticize you, they will find out your mistakes, and that will help you in growing more and more. And also, you will learn that this technique can be, or this work can be done in different way. And third is neurosurgery is about every nerve. Like, don't be the person who is doing only brain or spine. Also involved with the peripheral nerves, autonomic system, and peripheral nerves involve both brachial plexus, even the simple carpal tunnel surgery. The many of the neurosurgeons, they are not doing flexor retinaculum release and this pain block techniques. They are very simple and easy to learn. So try to learn these things from different institutes, or different consultants, or even you can ask your professor to do it here. So redefine yourself after passing from here, and include these parts. And then the writing skills. Okay. If you write articles, you will learn how to present yourself, and also to show your knowledge. And rejection is not that important. Rejection is always there. I also have around 80 rejected articles, but don't be disheartened by this. Writing is very important. Then draw pictures. Like if you are doing some unique case, skull-based case, or aneurysm, you will learn from, you will listen from senior consultant that they are making diagrams and showing that this will be done like that way. It is very important because it gives you pre-op insight of the lesion. So this drawing picture, I strongly believe that everybody should do drawing pictures. And then learn imaging. And this is very important, and this is very good part of GIPMER, that in my time also we were taught everything about MRI, CT scans. So I can say that at my institute I am a better reader of MRI, CT of brain and spine than the radiologist. And you should also work on this part, because a neurosurgeon who is going to operate the case, he or she should know more than the radiologist. And with time you will realize that what areas are to be looked for,
because in every case some part is there which a radiologist can miss, but a neurosurgeon can't miss. So after everything, last part is how to be satisfied. Like before coming to here, I think everybody should have some kind of aim. And if you haven't made an aim, I believe that most of the you guys can relate with these four aims. One is the academic aim, second is surgery, third is money, fourth is balance. Okay, and to be frank, that when I met most of the guys, everybody believes that a neurosurgeon earns in lakhs or crores, and they are money-minded. Then there are few who want to do only academic work, and then there are few who want to do complicated surgeries and earn name by the complicated surgeries. But you cannot achieve satisfaction by this. It is always the balance of all the three. I am not saying that you don't, you should not earn or you should not do complicated cases, but every one of you should maintain a balance between these three, and this is the goal which will be there for the whole life. So how am I doing this satisfaction? Like I'm doing academic work, tumor cases, but I was not able to do every complicated cases like aneurysm. So I joined government sector because in government sector you get unique cases, and there you can fulfill your academic purpose, and you will be able to write papers because you are having ample time. And this government sector helps you in spreading your name, because if you are doing good work, the large population is coming to you, you can spread your name. And then also you can provide help to the needy people, because the poor people, they are coming late and they are having complicated diseases more than the upper class which is going to the private sector with minimum symptoms. Then after defining your, after developing the surgical skill, I started working in private sector. I have not left. Now you want to reach the cream of the society or upper class or rich people, so you have to work in private sector. And I'm quite frank about this because that's how you can balance the both part. And now you have developed name in both sectors. Then attending conference, third part was I have never, in every year I went to some conference, one or two international conference or 2 to 4 national conferences. This was done to build relation, present work, and meeting my dear friends and observe other work, other people work. Like if you are doing aneurysm and you go to conference and somebody is doing better than you, so you develop a kind of jealousy, but this jealousy should be in a competitive way so that you can redefine your skill and do it better than him or her. Then the webinars, and as we were discussing, webinars are there in after Corona. The webinars are there for knowledge, but this webinar is not only for knowledge. You can build relations via webinars, and you can connect with your friends online through webinars. So I attend webinars around 1 to 2 every month, and that's how I connect with old friends. And then the writing and review articles I already told. And last was to doing unique surgeries. I believe that as a neurosurgeon, your USP should be some kind of unique cases. Like I have developed, I do microvascular decompression, and at my area, in around 200-kilometer radius, nobody is doing. You can carry on with this and develop name. And the DREZ, of course, this surgery is very rare and unique. I do it, and it is not that complicated, which it appears. It's quite simple. So I'm telling that with my experience, of course, you can also run this thing. Peripheral nerves, like most of the people, they don't know about this neuralgia and they don't do this surgery. But it is very simple and very good, almost 100% results if you are able to select the case. So I have shown you a few of my things, and again, this part was about the neurosurgery. Now, satisfaction is also achieved by being with your family or spending some leisure time. So, how I'm doing it, family trips. I bring my family in conferences.
or today also I brought my wife and child with me so that they can enjoy, and that's how I spend more time with them. And also with parents, I go to vacations every year, and I avoid work on holidays and listen music, watch TV, and monthly party with my colleagues, and also keep your hobbies with you because this is very important because in the neurosurgery it's a very tough and time consuming branch, but if you are maintaining your hobby you will be able to give some peace to your mind, and I do it by plants or drawing, and of course exercise. Especially I want to mention this point because with long duration surgeries, you will develop back pain, neck pain, and it's very common in the neurosurgeons, and also the big belly. And I want to especially insist on this. This should be your routine that 4 times a week you should work out, and especially of the lower limbs, back and neck, because otherwise you will not be able to do those kind of surgeries after 40-45 years. So, and the final part is the for peace of mind. I have some advice. Like this is when you will be alone and doing neurosurgery in some peripheral part or at some hospital. From my experience, what I learned is don't hurry while operating. Like in the periphery or whenever you will be alone, the anesthetist or the staff will judge you with the speed, that they will say that this consultant can do spine in 1 hour, this he can do clipping in 2 hours or 3 hours or 4 hours. Uh, don't be fooled by that. Take your time because in the beginning, if you take time, you will be able to do it in a better way. Then, if there is a new case which you have not done it or you have done it around 2 years or with one gap, plan properly by reading, watching videos. There are plenty of videos on YouTube, or you can discuss it with your seniors or professor, and arrange instruments, machines, and consumables. Because here you are getting everything and it is taken for granted, but in the periphery it is not like that. You will not be able to get good kind of microscope, or there will be bad instruments and before doing such kind of case you need to arrange those things and only then proceed. And this part is important, video consent, because if complication happens, this video consent, because I do inquiry of many neurosurgeons, because I am in government sector, I cover 4 districts and do inquiry. This part I want to especially insist that video consent must be taken, because most of the people they say that we are uneducated, and this statement we have not read, and doctor said this and that. So always take video consent, and this case should be first case so that you can work it with fresh mind. And third is always observe attendance behavior. This is very true for the private sector, because those patients who have aggressive attendants, who are you can judge by your sixth sense that these kind of attendants, they are very troublesome. So I believe that avoid doing such kind of cases, refer them to big institutes, and it is not bad. It is a good judgment that you are avoiding visual trouble. Uh, be polite, speak local language, and try to explain up to maximum. Politeness is very important, because in a government sector or in institutes, because of workload, sometimes residents they behave badly or they talk aggressively with the attendants. But when you are alone and you are facing the attendants, don't take them granted that they are patients and you are the boss. Be polite, and it is a very nice quality which is very rare. So try to develop it. If you can realize that if you are talking in a polite way or not. Then the written documents, videos are the most important thing. Like if if you are doing some bad case and somebody is suing you, or going for the consumer court or some negligence claim, so this happens after a gap like 6 months or 1 year. What I learned from the inquiries. So the documents, they are very important. If you are doing some bad case, like some case that has gone bad, so always correct your documents, because this is the written documents. And second, take pre of video, post of video, and video consent. These 3 things, they can save you. They can save you. They can give you peace of mind.
then avoid taking money from dying on complicated cases. This you will not realize at this time, but when you will be in private sector or some peripheral part, you will regularly read news that this hospital was not leaving the dead body without getting the money. So I believe that if a patient has died under you, don't take money from the relative, and whatever they have given, that is okay, but don't ask for more money. Or if a case has gone bad, because the money is the most important thing that matters for the patient relatives in most of the cases. Second is make protocols and follow them, and this should be done. You need to make protocol for yourself, for the department, and for the operation theater, and these protocols must be followed. Then, because if you will not follow the protocols, you will regularly make mistakes. So these were the advice from me in my experience of last year. So thank you, and so you can release your tension just like that. Thank you very much. I hope I was relevant. So, how many people have Yeah, questions, comments, you can say anything. Questions, comments. Sir, I have a question. Can you tell me more about the video consent thing? Do you do it in government or only in private sector? I do it in both, in government sector also, in private sector also, and also specifically for complicated cases, uh, like in video consent, you can include the first the name of the disease in local language, like I explain you for CP angle mass. So I tell them that आपके दिमाग में गांठ है जो कि दिमाग के सबसे नाजुक हिस्से में है, जैसे कि आपका सबसे यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं होती, और ये गांठ बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, और ये गांठ आपकी चेहरे की नस और कान की नस को खत्म कर चुकी है, लेकिन इस गांठ के पास आपकी खाने की नस, निगलने की नस, सांस चलाने की, दिल चलाने की नस है। तो इस जगह पे गांठ निकलने पे इन सबको नुकसान हो सकता है, जिससे मरीज को फिर सिंपल चीजें हैं, जैसे लकवा हो सकता है, गूंगापन आ सकता है, वेंटिलेटर पे आ सकता है। वेंटिलेटर को सांस की मशीन, बिकॉज दे डोंट नो वेंटिलेटर, लाइक if you read listen interviews of the doctors, they always talk in English. They say some words in Hindi and then those words in English, and you have to develop this skill that tell them in local language. सांस की मशीन, and you cannot say 7th 8th nerve. कान सुनने की मशीन है, सुनने की नस है, मुंह चेहरा चलाने की नस है, निगलने की है। You have to speak like that. और अगर इनको डैमेज हुआ, ये सब हो सकता है, इसके चांसेस इतने हैं। और नेवर से दैट ऑल, इफ यू हैव सम डाटा यू कैन कोट देम, लाइक 90% चांस है कि आपके पेशेंट है वो ठीक निकल आएंगे, 10% चांस है ये खराब हो सकते हैं, और चेहरे की नस खराब होने का चांस बहुत ज्यादा है, ऑलवेज से 50-50, बिकॉज दे आर मोस्टली हैविंग मोर देन 4 centimeter size tumors. So that's how I explain, and this part is included in video concept. Okay. And also sign to the document. Sign to सबके ही होते हैं. No, not in video consent. I don't do it, but of course, you have mentioned that, I will try to include that part also, because I never included that part. For like if you are going and you can make some kind of consent room. There you can, like the interrogation room of the police officer. They place the video on tripod, and that's how you can make your consent videos. So like after passing MCH neurosurgery, and we have seen almost some of the surgeries, like all of the surgeries, but we have mastered none. So how do we develop the skills right after passing so that we can like survive, or we can develop our skills? So what are the Very relevant question. Same thing happened with me. मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने जो पहला स्क्रू लगाया था, मुझे 6 स्क्रू लगाने में 8 घंटे लगे थे। एसी नहीं चल रहा था, लेड एप्रन पहना हुआ था, और मुझे करने के बाद में उल्टी आने लगी थी, बट मैं नील पर ली था, एनपीओ था, तो मुझे उल्टी आई नहीं। ठीक है, और मैंने स्क्रू बार-बार गलत लगाया था, बार-बार सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगाया, वो मसल में लगा रहा था, मुझसे जा नहीं रहा था। सियाम भी बहुत बेकार थी। ये नहीं है कि अब ऐसी सियाम मिलने वाली है। प्रॉब्लम यही है कि यहाँ से निकलने के बाद सडनली जैसे माँ के घर से निकल गए हो,
अब ससुराल आ गए, ठीक है, यही फीलिंग आएगी, सब कुछ डिफरेंट होगा। तो और ये अगर तुम बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जा रहे हो, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट में जा रहे हो हॉस्पिटल में, वहां पर तुम लोग पहले जूनियर हो गए, तुमको कोई उतना मिलेगा नहीं। तो ये रहता है चॉइस की अब लर्न कैसे करो। लर्न में अभी जो सीखना है, you should learn the basics, like try to find the pedicle or put where to put in for spine. I'm telling you this, for the brain, like don't go for the complicated cases in the first year. First you to choose case wisely. You want to do simple cases and take your time in those cases. And in trauma cases, like in trauma cases what I have done that simple trauma cases or those cases where the tumor was simple, I used to remove the tumor and then do sylvian dissection for the sake of aneurysm. Like when I will do aneurysm, I will do like this, because in those cases they have very good sylvian fissure anatomy. 90% they are ruptured and the sylvian fissure is full of blood. So that's how I learned the art of sylvian dissection. And then watching videos, like you can watch videos and after doing case, then re-watch the video, because during the surgery you develop goosebumps sometimes, और कई बार एक फीलिंग आएगी कि इसको छोड़ के भाग जाऊंगे, तो कोई और कर देंगे, ठीक है, कोई और कर दे, भाग ही जाता हूँ यहाँ से। ये हुआ मेरे साथ, एवीएम था मेरा, मैंने गलती से कर दिया था वो, उसका रात में केस आ गया, एवरीबडी नोज हिंदी, तो रात में केस आ गया, रप्चर्ड एवीएम था। मेरी सेंस में ये था कि सिंपल पेरेन्काइमल हेमेटोमा है, जाऊंगा निकाल दूंगा। जब मैंने खोला तो वो निकला एवीएम, और एवीएम में ब्रेन टूट के बाहर आने लगे। तो जब मैं कर रहा था तो मुझे ये फीलिंग आ रही थी मैं छोड़ के भाग जाऊं, क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा था, बट वो हो गया। मॉर्निंग तक हुआ, रात में शुरू हुए 9 बजे, अगले दिन 11 बजे मॉर्निंग में मुझसे खत्म हो, पेशेंट भी बच गया। तो वो वाली फीलिंग ना आए उसके लिए क्या, वीडियोस देखना, ठीक है, कोई केस आ रहा है उसको डिस्कस करना। को अब तो क्या है, तो जब ये मेरा पहला एपिसोड हुआ था ये 2017 था, अब एआई है, आप स्कैन को पुट अप करके पेशेंट के थोड़े वो एसेंशियल्स पुट अप करके यू कैन आस्क फॉर द रेलेवेंट डायग्नोसिस। वो कई बार वो चीज शो कर देगी जो तुमको पता नहीं है। लाइक अगर आज के टाइम में होता तो मैं उसका स्कैन करके और थोड़ा पूछ लेता ये क्या है, तो एआई मस्ट हैव टोल्ड मी कि ये एवीएम रप्चर भी हो सकता है, तो दिमाग में आ जाता है ना, मैं बोन हटा के आ जाता, ड्यूरा ओपन नहीं करता। तो जो प्राइवेट में या पेरिफेरी में जब खुद पर आओगे कि अब मैं ये केस कैसे करूं, तो अपना केस डाल के थोड़ा थोड़ा उससे लर्न कर सकते हो। वीडियो से तो लर्न करोगे, अभी अपनी चॉइस से डिसाइड कर लो कि ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस है, इसके स्टेप्स यही है, उनके नोट्स बना सकते हो कि मैं ऐसे ही चलूंगा। मैंने जब स्पाइन किया मुझसे गलत हुआ तो मैंने बुक से नोट्स बनाने शुरू कर दी कि पेडिकल के अंदर एक ये मार्किंग होती है, इसके जो ऊपर का 30 mm होता है, 3 सेंटीमीटर, दैट कवर्स द पेडिकल, लास्ट पार्ट कवर्स ओनली द बॉडी। तो मुझे जब तक ये 3 सेंटीमीटर अंदर ना जाए तब तक मुझे मीडियल पार्ट ऑफ पेडिकल है उसको ब्रीच नहीं करना। उससे मुझे ये समझ आया था कि स्क्रू मेरा इनसाइड ना जाए। और आपको ये कॉम्प्लिकेशन पता होना चाहिए, स्क्रू डालने में एक ही कॉम्प्लिकेशन है कि मीडियल साइड ना चला जाए, लेटरल साइड चला गया गलत गया, लेकिन पेशेंट को कुछ नहीं होगा कि कल को स्क्रू पुल आउट हो जाएगा, लेकिन पेशेंट की नर्व डैमेज नहीं होगी, ठीक है। वो तुम स्कैन में भी देख लोगे और गलती हो गई है तो एक्नॉलेज करके उसको वापस ले लोगे कुछ भी तरीके से, ठीक। अगर तुमने पेशेंट के साथ में अच्छे से बात करी तुम एक्सप्लेन करके ले पाओगे। तो ऐसे हर चीज के अपने छोटे छोटे नोट्स। अब क्लिपिंग करने जा रहे हो, लेट्स से कि क्लिपिंग एक टफ केस है, तो शुरू में तुम्हें पता होना चाहिए कि बॉन्ड नहीं बनना कि मैं बिना टेम्परेरी क्लिप लगाए क्लिप लगा दूंगा। क्लिप लगाओ अपनी आराम से, ठीक है, टेम्परेरी क्लिप उससे ही लगा दो, डिसेक्शन करो, फिर हटा लो, लगा दो, और पहले टेम्परेरी क्लिप को लगा के बाहर ही देख लो कि हाँ ये ऐसे लग रही है, ये ऐसे लग रही है। कॉरिडोर बड़ा कर लिया, हर एक के कुछ कुछ स्पेशल पॉइंट दे रखे हैं कि एन्यूरिज्म करना है तो उसको वाइड ज्यादा करके करना है। शुरू में एक्सपोजर मिनिमम कर लिया, हाफ हार्टेड एक्सपोजर है, मेन पार्ट को डील करने में ज्यादा जा रहा है। स्कल बेस ट्यूमर में बहुत अच्छा ओपन करोगे, रिलीज करोगे ब्रेन को तो ओपन वाइड हो जाएगा। ये एग्जांपल, ये अभी से ही ध्यान देना शुरू कर दो। लाइक इफ यू आर इन करियर, ऐसे ऐसे चलना है, ये कॉम्प्लिकेटेड केस है और ये मैं करूंगा। अगर नहीं हो रहा तो एक बार मत करना, जाके दोबारा देखो, क्योंकि कोई और करने को नहीं देगा। कैडेवरिक एनाटॉमी, सिमुलेशन कोर्स या जो भी है, ये सब तुम्हें वो पार्ट नहीं सिखा सकते जो इंट्रा ऑप होने वाला है।
कुछ प्रिपेयर कर देना, ठीक है। तो मैंने जो सीखा वो वीडियो से, डिस्कशन से, जो खुद के नोट्स बनाकर, ठीक है, और थोड़ा टाइम ज्यादा लेकर, खूब टाइम लेकर। After passing from MCH, you literally made the department. So whatever over 10 years the department has been made for now. So you must have included so much into your armamentarium, like microscope, ultrasound. So how is that journey been and how achieved are you now? Okay, I have microscope and I have like cheaper alternatives. Like for spine drill, recently I got a handpiece of marathon drill. Marathon is a very cheap drill. It costs around 1 lakh. And now they have given me another kind of the angled drill piece where you can put the water injector along with it, just like the Medtronic drill or vascular drill, and it costs around 20 or 30,000 the whole assembly with the motor was separate. So after going out, you can find out those cheaper alternatives by discussing with your seniors who are doing work in periphery or private sector. Like you can ask me, and there are guys who are providing instruments at very cheaper rate. Like in Japan, the micro Caesar costs around 60,000 rupees, the Kamiyama micro Caesar. But in India, they are making it at the rate of 12,000 rupees. Especially Kamiyama or simple micro Caesar, you can get it by 8,000 rupees. The non-sticky bipolar cautery. The Germans, they are charging around 50,000 rupees. But I am buying that for 10,000 rupees, and cheaper alternatives are there. They are back. They are around 4,000 rupees. So the different neuro navigation or intra-op ultrasound or the expensive drills, uh, you are not, everybody is not going to get that things, okay, because neuro navigation, even if it is cheaper, it costs around 80 lakh rupees, 60 lakh rupees. So you have to define your, like you can develop surgical skills, that your understanding is so much clear that without neuro navigation you can reach the small lesion. And if it is in the deeper part and very small, don't do it because you will cause more damage. You can refer those kind of cases, and because those kind of cases are quite rare. So if one or two cases are coming, you can refer them. And like for endoscope, see Chinese, they are providing it at the endoscopes without the camera and all those things. Endoscope they cost around 20 or 30,000 rupees. But you buy the strokes that cost around 35 lakh, 35 to 45 lakh rupees. So there are so many cheaper alternatives, and those neurosurgeons who are doing in working in periphery, they can guide you about it. तो तुम लोग भी यही कर सकते हो, पूछ सकते हो, हर चीज का सॉल्यूशन लगभग है, लगभग. I just want to add in this. So whenever you are going to a conference, always see all the students, always see all the equipment, rather than taking the gifts. Just these are the gifts actually which will stay with you all your life. So one thing, and second thing is there is an expo which happens in this. Always there is an expo happens for the surgical equipment in school. Just be be aware of when it is happening, and you should go and see that expo. You should always go and see the expo. You will see cheaper things, you will see Chinese and all those things. So it is very essential. And third thing is, you just save the money for your marriage. Don't spend money in your marriage. Save that money that you can buy some good equipment. Trust me, this will help you. Marriage तो रहेगी नहीं, किसी को नहीं पता. But you can get equipment and stay with you all your life. So try accumulating the money. And what he was telling about the single person, always make a team. Never work on it. Never ever. Now this is the time when you have so many surgeons that never work on it. You can share the money, you can share the knowledge, you can share the case, but never work on it. मैं लोन न्यूरोसर्जन हूँ, बट मेरे साथ टीम है. मैं ऐसा नहीं मैं बस स्केलिंग ड्रिल भी कर रहा हूँ, मैं सूचर भी लगा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं, ठीक है, इतना भी खराब नहीं. Private में वैसे भी they always ask you to have a buddy. Say airplane में buddy है ना, ऐसे you should have buddy. तुम्हें तुम fail हो गए क्या करोगे?
ठीक You है। never know. Surgeon को Australia में he was going along the beach, he had accident, he died on the beach में, neurosurgeon. न्यूरोसर्जन की तो कुछ ज़्यादा ही बैड लग होती है। Yeah, तभी वो आता peace of mind बहुत जरूरी है। Question. Sir, do you have endovascular setup in a government hospital? No, I don't have, but I do DSA in private sector, and I'm planning for coiling, but because of financial constraints, because patient they are not paying, but I'm eager to do the coiling part. So PMJ who नहीं कर is रहे, you're not taking PMJ. मैम PMJ में पैसा नहीं दे रही है, क्योंकि उन्होंने एक और अभी जो रिसेंट में हुआ, अभी बताता हूँ वो न्यूरो, वो कह रहे हैं कि न्यूरो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट का आपने वो नहीं ले रखा है। अरे यार वो करो। नहीं, we are working on it. Actually, we have written and we'll send the reminder. That is true. कि neurosurgeon ने लिखा, उसमें neuro intervention लिखा हुआ है. That is a big issue. So all should unitely write to the NSI. Also neurovascular also. Send them the letters, send them the mails that this is a big issue which is happening and there is वो जो लिखा हुआ है वो neuro intervention लिखा है, neurosurgery नहीं लिखा है. We are also working on it and we are going to send a reminder that neurosurgery should be, surgeon should be added in this category. One thing. Second thing, write to the LMC, write to the NSI, write to the, when you are so senior and when you are joined the bodies, the societies, you should write to them so that they will help. Somebody was asking me yesterday what is the need to join the societies. That is how the societies help you. Yeah. Right? So write to them that I'm facing this problem and add this. So otherwise also NSI is working that endovascular should be added to the curriculum of NMC in the neurosurgery. Yes, ma'am. who is getting the endovascular cases in the private sector? First, which branch? Neuro interventional radiologist is getting, or the patient is being referred to? We have only one neuro intervention radiologist, and he is doing simple cases, coiling of aneurysm. He is not doing embolization of AVM. So, I'm working in 3 places, but he is doing that part in 1 place. So, 2 sites they are not covered by him. So, वही है, मैं टेप के लिए मैं मैनिपुलेट करता हूँ, पेशेंट को मैनिपुलेट करता हूँ, जो हो जाता है उनका. इवन आई डू पोस्टीरियर सर्कुलेशन क्लिपिंग आल्सो, और जो बिल्कुल ही टफ है, स्पेशली दी वर्टिब्रो-बेसिलर जंक्शन पार्ट, उसको मैं फिर कॉइलिंग के लिए एडवाइस करता हूँ. अदरवाइज बेसिलर टिप है, आई डू बेसिलर सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी जंक्शन है, आई डू. और ये रेयर एन्यूरिज्म है, लाइक यू नो दैट मोस्ट कॉमन एन्यूरिज्म तो एकोम, एमसीए, आईसीए, पेरिफेरी में जीवी पंथ की तरह एन्यूरिज्म नहीं आ रहा है कि सोसो एन्यूरिज्म एक मेरे पास तो फिर भी ठीक है 20-30 केसेस पर ईयर, बट नॉट लाइक 100 केसेस. 20-30 में रेयरली कोई एक निकले. तो मैं आई हैव डन अराउंड 6 or 7 पोस्टीरियर सर्कुलेशन एन्यूरिज्म, उतना हो चुका. तो वही जैसे मैंने कहा, अब डीएसए मैंने निकलवा लिया उनसे कि डीएसए का तो पे करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर में, तो डीएसए कर पा रहे हैं. अभी कॉइलिंग के लिए शायद इसके बाद में हम लोग कॉइलिंग भी ले पाए. आना चाहिए. मेरा बीच में 5 इयर्स का गैप आ गया था, क्योंकि मेरे गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं था. मैं 2016 to 2020 में कर नहीं पा रहा था, बिकॉज आई डिडंट हैव सेटअप. लेकिन जैसे ही प्राइवेट में गया, मैंने जाते ही डीएसए शुरू कर दिया था. एंड मैं उसके लिए मैंने डिस्कस किया मेरे कलीग से, तुषित मेवाड़ा. ही इज वर्किंग इन अहमदाबाद एंड ही इज डूइंग गुड एंडोवास्कुलर वर्क. सो मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड वन ऑफ माय जूनियर दीपाशु सप्तेवा, ही वाज शाम से था, जूनियर था, and he is also doing good endovascular work. तो उनसे थोड़ा बेसिक आइडिया लेके फिर मैंने शुरू किया, और वो धीरे-धीरे आ जाता है. अब डीएसए में पिछले 5 साल से 6 साल से कर रहा हूँ पूरे. The class is doing we have made a society. हाँ, मैं उनकी इनविटेशन है, वो आई थी आईएएस एनवीआई करके बनाया उन्होंने सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशन एंटरप्रेस का करके एक सोसाइटी बनाया है. देखो, We are few of the founder members. वो ज्वाइन करनी चाहिए, यही फायदा है. Actually, the idea of making the society was so late. The neurosurgeons are not allowed to work in the private. For the university. So, your experience in vascular fellowship after doing the vascular cases in GIPMER after passing MCA? Yes, उसका भी रीजन था. क्यों जाके गया, क्यों गया? एक तो जापान था, तो जाना मतलब लाइक पहले तो ये लगा कि ये टैग है कि फेलोशिप लगा दूंगा मैं मेरे नाम के आगे, और प्राइवेट में वो एक शो करना था. मैं बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन हूँ, मैं एमबीबीएस, एमएस, एमसीएस, फेलोशिप, एफआरसीएस, डिग्री फलाना बहुत कुछ हूँ.
उस टैग के चक्कर में गया था, लेकिन जब मैं वहां गया तो मैंने जो डिफरेंट चीजें करी, एक तो इंस्ट्रूमेंट्स देखता रहता था मैं उनके क्या क्या यूज कर रहे हैं, मुझे वो थोड़ा सा डिफरेंट लगते थे। उनके मैंने लोकल पार्ट डेवलप करने शुरू करते हैं। लेकिन टेलिंग यू कि अब तो इंडिया में मिलने लगे, एक वो बुक लगाते हैं मसल में और उसके रबड़ लगा होता है सिलिकॉन, और उसको लगा देते थे, तो उससे हम लोगों को कोई रिट्रैक्टर, वो जो सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर और उनकी जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आके मैं क्या करता था, डांडी फोर्सेप्स से मसल पकड़ता था, उसके ग्लव्स का जो ये रबड़ होता है उसको फंसा के और उसको खींच के चारों तरफ लगा के बनाना शुरू कर दिया मैंने। ठीक है। अब रिसेंटली जो एक है इंडिया वाले ने, किसी ने वो बना दी हुक और उसके पीछे एक नीला सिलिकॉन का अटैचमेंट जो खींच के लगा सकते हो। वो जो वहां पर दे रहे थे वो एक पीस 1 केस के लिए 5000 का था। इंडिया वाला बेच रहा है उसको 150 रुपए का, और 10 ले लो 150, और वो करते रहो जब तक आपका टूट नहीं जाता। तो पहले खुद का जुगाड़ हो गया, ये नई चीज देखने को मिली और सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है इसमें। फिर हो गया डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो सीजर्स। जब मैं यहाँ था तो कुछ शेप्स थी, वहां जाके देखा ऐसे ऐसे बहुत सारी है वो शेप्स। अब जैसे मैम कह रहे हो, आप जब स्टॉल पे जाओगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा इतने टाइप की माइक्रो सीजर्स की शेप है। फिर ये आते हैं कि क्यों लूं मैं, मुझे एक स्ट्रेट से हो रहा है, ये हो रहा है वो। जितने डिफरेंट केस करोगे उतना पता लगेगा कि ऐसे वाली ऐसे वाली ऐसे वाली क्यों चाहिए। ठीक है, वो चीजें लर्न कर ली। थर्ड हो गया कि अब क्लिप्स है। अब मुझे यहाँ से शुरू में एनिमेशन क्लिप करता था, मेरे पास स्टॉक होता था 5 क्लिप का, स्ट्रेट या इतनी से कर्व बस, और वही 5 7 9 mm वहां लग जाता। 100 का एक वो लाके पीस रख देते, वो चूज करते। उससे पहले वो प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि उनके अनरप्चर्ड एनिमेशन है, हाई लेवल का 3D CT एंजियो है, MRI भी साथ में करा रखा है, वही बना रखा है उन्होंने बिल्कुल बहुत ही अच्छे से। वो सब कुछ प्लान है, उसी प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि जीबी पंत के रिसोर्सेज तब तक लिमिटेड थे, ऐसा नहीं कि हम लोगों के पास में उतनी एडवांस टेक्निक है। तो मुझे जो समझ आया कि चलो मेरी टेक्निक, मेरे पास उतनी डेवलप मशीन्स तो नहीं होगी, बट मैं जाके एक डायग्राम बनाऊंगा, उसके हिसाब से मैं एक क्लिप सेलेक्ट कर लूंगा। अब मेरे पास 5 क्लिप होगी, मैं उस 5 क्लिप में उसका इंक्लूजन रखूंगा कि मुझे 9 mm की क्लिप चाहिए, 7 की चाहिए, ताकि एटलीस्ट मेरे पास मेन एनिमेशन को क्लिप करने के लिए हो। उसका एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने कोरोना टाइम में एक एमसी एनिमेशन करा, उसको कोरोना हो रखा था, मुझे लेके बिल्कुल ही सेपरेट एक बहुत घटिया ऑपरेशन थिएटर में कि कोरोना और आई मोटिव क्लिप करने के लिए जब मैंने एनिमेशन को डिसाइड कर लिया तो मुझसे क्लिप ना हो क्योंकि क्लिप छोटी पड़ गई। वो ब्लंडर था मेरी तरफ से, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था कि क्लिप कर दूंगा कोरोना वाले पेशेंट को क्लिप कर दूंगा, क्या ही कर दूंगा। वो एक पार्ट था जब मुझे रियलाइज हुआ कि अगर इसमें भी वही प्लानिंग करके चलता, मुझे पहले ही पता था कि 11 mm की क्लिप चाहिए इसमें मुझे एटलीस्ट, तो मैं इसको ठीक कर लेता। वो फोड़ फाड़ के मैंने कर तो दिया, वो ठीक भी हो गया, बट वो जो उस एन्यूरिज्म रप्चर हुआ, ब्लीड हुआ, उसके कारण बड़ा मैं परेशान हुआ। तो जब आप अलोन हो गए, वो जब बाहर हो गए, तो आपको जितना ज्यादा प्लानिंग स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा ओटी में स्ट्रगल कम करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास उतने स्ट्रांग रिसोर्सेज नहीं होंगे। ये बहुत वाला है, स्पाइडर वाला है, ऑल कलर पेंसिल, तो हाँ वो सारा डायग्राम बनाता है और उसमें वो बैठ के डायग्राम बनाता है। पहले बेस्ट व्यू, जैसे तुम बेस्ट व्यू एनजीओ में सिलेक्ट करता है, that is how he selects the best view which you will find during the surgery and how you apply the clip. He applies the clip there. He makes a diagram with all these colors, so colorful diagram. I have his photos. और उससे बनाएगा, करेगा, फिर क्लिप लगाएगा और फिर आएगा। ऐसे नहीं कि उठ के आ गए वो तुम्हारा किसी बंदे ने 4 क्लिप दे दिया। इसलिए हम लोग चिल्लाते रहते हैं सिस्टर पे। सिस्टर थिंक्स अबाउट द पैसा की, सिस्टर बैठी पीछे ये सोचेगी पैसा लगेगा, मेरे को डांट पड़ेगी, मेरे को क्लिप देखनी पड़ेगी। They don't realize what problems we face actually. They don't realize this, but you should create this. You should plan it. It's very very essential. 2 क्लिप लेके बैठ जाओ तो फंस गए, क्लिपिंग अरेंज किया बैठ गए, फॉलोइंग अरेंज किया बैठ गए टेस्ट करने को। तो प्लानिंग का मतलब you should write down. प्लानिंग ब्रेन में नहीं हो सकती unless you write down प्लानिंग करो। तो सबसे अच्छा सीखोगे जितना गंदा केस करोगे उससे। अगर अपने गंदे केस से नहीं सीखा तो तुम लोग लर्न नहीं करने वाले। मुझे याद है मैंने एक नई टेक्निक देखी कि सीपी एंगल मास्क में यू कैन कट द लेटर 1/3 ऑफ सेरिबेलम एंड विदाउट यूजिंग लेला रिटेक्टर यू कैन रिमूव द ट्यूमर। मैंने टाइप 2 न्यूरोफाइब्रोमा में ये अप्लाई किया, ब्रेन में स्वेलिंग हो गई।
क्योंकि वो मैंने पहले प्लान नहीं किया, वो मैंने बीच सर्जरी में प्लान किया कि चलो अब सेरिबेलम हटा देता, मैंने और डैमेज कर दिया। तो ये चीजें हैं, मुझे आज तक याद है कि अब जो स्टेप लेना है वो पहले प्री प्लान होना चाहिए। ड्यूरिंग सर्जरी आप सडनली प्रोटोकॉल चेंज नहीं कर सकते अंटिल अनलेस कोई न्यू कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। प्रोसीड विद समथिंग, और लास्ट में यही आता है कि बजाय पेशेंट को हार्म करने के, नहीं हो रहा है एक बार रुक जाओ, ठीक है, ब्रेक ले लो, रोक दो, सर्जरी को अबेंडन कर दो, कोई बात नहीं, पेशेंट खराब नहीं होना चाहिए। Question or comment? Question or comment? They should come. We should come with a comment. Any special challenges to be faced as a female neurosurgeon? स्पेशल चैलेंज वो आएगा फैमिली, जब अदरवाइज तो सब बराबर है, बट जब फैमिली बन जाती है तो फीमेल न्यूरोसर्जन के लिए वहाँ पर वो बहुत बड़ी बेबी होना, वाइफ होना, वो उसमें आता है। तो उसमें तब स्पेशली अपने केस का सिलेक्शन डिफरेंट करना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो पार्ट रीडिंग में लगा सकते हैं। रीडिंग और वो जो यूट्यूब वीडियोस है वो अपने आप को उस टाइम पे दे रहे, बिग फाइट के लिए जब ट्रेन हो रहा होता है आर्मी, उसमें लगाया जा सकता है। उसको वैसे नहीं लेना चाहिए कि चलो ये टाइम खराब हो गया अब क्या करो। कई बार फ्रस्ट्रेशन आती है कि एम्बिशियस बहुत ज्यादा हो, लेकिन अभी तो एक ब्रेक लगा दिया है, नेचर ने ब्रेक लगा दिया, तो उसको दूसरे तरीके से रीडिफाइन कर सकते हैं। उस टाइम पर अब जो केसेस में कुछ गलतियां हुई थी या जो केसेस टफ लगे थे, अकॉर्डिंग टू दोज केसेस यू कैन डेवलप सम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और सम थिंग्स कि जो मुझे आगे जाके मुझे ऐसे करना है, ये मैं डिफरेंट तरीके से करूँगी, वो और भी अच्छा रहता है। जैसे कोरोना टाइम में जब ब्रेक मिला था तो मैंने अपने आप को कुछ चीजें डेवलप करी थी। DREZ मैंने कोरोना टाइम में सीखा था, उससे पहले मुझे DREZ नहीं आता था, मैंने कभी DREZ देखा नहीं था। तो ये चीजें हैं जो ड्यूरिंग जो भी होगा लर्न कर सके। सेकेंड है जो सारे जो मेल एसोसिएट्स है वो सेम टाइप के नहीं मिलेंगे। कई जो ट्रबल करने वाले या अंडर एस्टिमेट करने वाले वो हर जगह होते हैं, कुछ की मेंटेलिटी होती है, तो उससे डिसऑर्डर नहीं होता, वो चैलेंज की तरह लेना है। जितना चैलेंजिंग होगा एनवायरनमेंट उतना ग्रोथ ज़्यादा मिलती है, तो वो हमेशा ध्यान रखना। ऑफ कोर्स फीमेल के लिए हमेशा डिफिकल्ट होगा, बट उन चीज़ों से पॉजिटिव वे में अपने आप को और डेवलप किया जा सकता है। I want to add, sorry, इस चीज में ऐड करूँगा। डॉक्टर मथुरिया बोलते थे, जब भी मुझे मिलते थे, I would have been मैं क्यों women नहीं हूँ? So what women can do, men cannot do. Yes. Never think that you are women. You are more artistic than men. And Yeah. more balanced. You are more balanced than men. You don't require cigarette, alcohol, tobacco to balance your life. Definitely. So you are more balanced. फीमेल पेशेंट्स होते हैं, उनकी आउटकम ज्यादा बेटर होती है क्योंकि बिकॉज़ चेस्ट साफ होती है। अभी इंडिया में तो ठीक है, They know to work in team. क्योंकि रूरल एरिया में बीड़ी बहुत चलती है, तो जो आउटकम देखी जाती है न्यूरोजन की पोस्ट ऑफ आउटकम होती है, मुझे फीमेल में बहुत अच्छी मिलती है। मेल में वही बेजोस्टार मार के इतना खराब हो गया ना। So right, like when we are in the institutes, we are under good mentorship. But after like passing out, how to choose the good mentors? वो डिपेंडिंग अपॉन दी लाइक सब स्पेशलिटी ऑफ न्यूरोसर्जरी, उसमें तुम्हें चूज करना पड़ेगा। और दूसरा है जो उस लाइक मान लो तुमने वेस्कुलर छोड़ के पेरिफेरल नर्व पकड़ लिया कि मुझे पेरिफेरल नर्व को अपने आप को करना है, तो पेरिफेरल नर्व में जिसने कर रखी है फेलोशिप, पहले तो वो बंदे ढूंढने होते हैं कि कौन किसने कर रखी है। और आजकल तो ग्रुप से अवेलेबल है, इतने सारे ग्रुप है, न्यूरोसाइंटिस्ट वगैरह। उसके बाद में वो बंदे ढूंढने जो पेरिफेरल नर्व में स्पेशल काम कर रहे हैं, जिनके पास में वर्कलोड है। उनमें कौन सा बंदा ऐसा है जो फेलोशिप में फेलोज पे अच्छा काम कर रहा है, लाइक वो उनको टीच भी कर रहा है, वो उनको कैडेवर्स भी दे रहा है, या उनको सिमुलेशन करा रहा है, या उसके पास केस लोड है, वहां पर तुम लोग फेलोशिप करके आ सकते हो। अदरवाइज तुम्हें मेंटर्स तो मिलने वाले नहीं है अगर तुम गए पेरिफेरी में और जहाँ तुम अकेले हो, और तो कोई तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं होगा। अब आता है जब तुमने ये लर्न कर लिया, उसके बाद में आसपास में अगर कोई न्यूरोसर्जन और है, तो हम डॉक्टर्स में एक बहुत बुरी आदत है, हम लोग कंपटीशन
बैड वे में लेते हैं। पुराने टाइम में बहुत ही ज्यादा होता था कि एक दूसरे की पिचिंग करना, सिंपल, उसने खराब केस किया है, इतनी हड्डी नहीं हटानी थी, इतनी हटानी थी। ये मेरे सीनियर ने मुझे बताया था, बेचारे वो इंदौर गए थे, उनके जो वहाँ एक कंसल्टेंट थे, उनकी हैबिट होती थी डीकम्प्रेसिव में जो भी यंग न्यूरोसर्जन आया उसके लिए यही बोलते थे कि इसने बोन है ना वो छोटी हटा दी, इसलिए आपका पेशेंट ठीक नहीं हो रहा। तो ये हैबिट्स तुमने नहीं रखनी, हम लोगों को ये चीजें क्लियरली पता होनी चाहिए कि पेशेंट कभी भी डॉक्टर का नहीं होता। तो ये चीज जब समझ आती है जब केस खराब हो जाए। पेशेंट तुम्हारा तब तक है जब तक तुम अच्छा काम कर रहे हो। जैसे ही तुमसे कुछ गलती हुई, पेशेंट तुम्हारा नहीं है, चाहे तुमसे वो कितने ही प्यार से बात कर रहे, चाहे तुम कितने ही पोलाइट हो, जो मैं भी दे रहा था। हाँ, मैक्सिमम टाइम तो उसमें आता है अपने अली न्यूरोसर्जन जो आसपास है उसकी बुराई करने के बजाय उससे एक रैपो बनाओ, उसके साथ में तुम एसोसिएट हो सकते हो। जैसे मैम कह रहे थे, अकेले रहने के बजाय आसपास में लोगों से हेल्प लो, और अब कोई बंदा कोई चीज काम अच्छा कर रहा है तो उसको बुला सकते हो। दोस्ती हो गई तो बुला सकते हो ना कि मैं ये केस प्लान करने वाला हूँ, आ जाना। तो अगर उसको कुछ आता हो तो वो भी सिखा देंगे। तो वो लोकल मेंटर्स होंगे जो उस लेवल के नहीं होंगे, बट वो कुछ तो है जो तुमसे सीनियर है या जो भी है। और दो लोग साथ हो तो थोड़ा सा मन में पीस रहती है कि नहीं ठीक है, मुझसे कुछ होगा तो ये भी देख ही लेगा, इसके भी अलग दिमाग चलेगा, आइडिया चलेगा। ठीक है, तो फेलोशिप वाला पार्ट आने के बाद आते हैं लोकल बॉडी बनाना। और ऑफ कोर्स जो अब ये मटेरियल इतना सारा अवेलेबल है, कुछ भी नया देखा है, वीडियोस बहुत सिखाते हैं। ठीक है, वीडियोस बहुत सिखाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल और दे रहा हूँ, डीआरई जेट पे दे रहा हूँ। मैंने पहला डीआरई जेट करा, उसके लिए एक स्पेशल इलेक्ट्रोड चाहिए होता है जो 2 mm की डिस्टेंस पे जाके बर्न करता है। मेरे पास नहीं था वो इलेक्ट्रोड। मैंने बाइपोलर कॉर्टरी के ऊपर इन्फेंट फीडिंग ट्यूब काट के 2 mm की लेंथ को छोड़ दिया, और उससे मैंने सोचा मैं बर्न कर दूंगा। पेशेंट को पोस्ट ऑप में लेग में वीकनेस आ गई जो उसकी नॉन कॉम्प्लिकेशन है। तो मुझे लगा ये कामयाब नहीं हुआ। तो वीडियो में एक जापानीज न्यूरोसर्जन का आंस का वीडियो है, उन्होंने डाल रखा है कि विदाउट कॉर्टरी इलेक्ट्रोड सिंपली 4 mm तक तुम वाइडन कर सकते हो, जैसे ये नॉर्मल फोर्सेप्स से ओपन करते जाओ, और फिर एक पीस लेके डिस्टेंस नाप लो कि तुमने 3-4 mm वाइड कर लिया। मैंने वो टेक्निक यूज करी लास्ट 5 केसेस के अंदर, मुझे वीकनेस नहीं मिली और आउटकम नॉर्मल डीआरई जेट से ज्यादा बेटर होगी। तो ये एडवांटेजेस है, तो ढूंढो, मिलेगा तुम लोगों को जब तुम लोग चाह रहे हो। Thank you, Dr. Ishu. It was such an informative session. Further discussion will continue with slides. Thank you.